Hello dear children, welcome back to the Technology series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6. This is your English reader book and the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, today we are going to do chapter number 15 of your book and the name of the chapter is The Age of Computers. So let's start with the chapter. So in this lesson tells us about the electronic age. ये lesson हमें electronic age के बारे में बता रहा है. In this age, the most useful invention is a computer. In this lesson, we shall read when and who invented this. किसने इसे इन्वेंट किया था और कब किया था. How it has got developed by the time. So time to time ये कैसे चेंज हुआ and how it is helpful in scientific development and research. So scientific development और research में इसने कैसे help किया computers में. And finances and economics. Finance और economics में भी इसने कैसे help किया है. Let's read this lesson. चलिए तो हम इस lesson को start करते हैं. So children, here you can see the picture of a boy who is sitting in front of the computer. This is a computer, that means this is a monitor, mouse, keyboard and CPU may be kept somewhere. So ours is an electronic age. हम जिस युग में हैं आज उसे हम electronic age कहते हैं. Computer is one of the most useful inventions of this age. और इस एज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है वो है कंप्यूटर्स. इट इज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर. सो वेदर की इंफॉर्मेशन हमें जाननी है तो हम कंप्यूटर से इजीली उसे जान सकते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर हैज चेंज्ड द वे ऑफ लाइफ. सो कंप्यूटर का जो भी इम्पैक्ट है उससे हमारा वे ऑफ लाइफ चेंज हो चुका है. इट हैज अ नंबर ऑफ यूजेस इन मॉडर्न लाइफ. तो आज की जो लाइफ है, आज की जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है. विद द इंक्रीजिंग नीड ऑफ फास्टर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स टू अंडरवेंट अ चेंज. सो जैसे जैसे कम्युनिकेशन फास्ट होता गया, कंप्यूटर के अंदर भी चेंजेस आते हैं. Since the development of the first electronic computer by Dr. Turner in 1943. So पहली बार जो first electronic computer है वो किसने बनाया? डॉक्टर टर्नर ने बनाया था in 1943. The changes in this it continued to be at a faster pace. So आज के टाइम में इस कंप्यूटर में रोज आप देख सकते हो कुछ ना कुछ चेंज किया जा रहा है. The first electronic digital computer developed in 1946. तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कब बना था? 1946 में. Was so big in size that we had to contain it in a room. So पहले जो कंप्यूटर बना था वो इतना बड़ा था कि उसको पूरे एक रूम की जरूरत पड़ती थी रखने के लिए. एक बड़े से रूम के जितना बड़ा था वो कंप्यूटर. Since then, the advancement in the computer technology has given us laptop. उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जितने भी चेंजेस होते गए धीरे धीरे उससे क्या रूप ले लिया? एक लैपटॉप का रूप ले लिया, पर्सनल कंप्यूटर का रूप ले लिया, which are most compact and powerful. तो ये जो कंप्यूटर्स आज के डेट में यूज हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मीन्स इजिली एडजस्टेबल ले सकते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल है. उनसे ज्यादा शक्ति है कंप्यूटर्स में, एक से ज्यादा काम कर सकते हैं. दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड कैन बी यूज्ड ऑन आवर लैप्स. सो ये जो कंप्यूटर है वो कम एक्सपेंसिव है, इनका खर्चा बहुत कम है और आराम से हम इन्हें अपने लैप्स पे मीन्स अपनी गोद में रख के भी हम वो कर सकते हैं. बिसाइड्स द डिजिटल कंप्यूटर वी हैव टुडे टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. सो डिजिटल कंप्यूटर के अलावा भी दो अलग तरीके के कंप्यूटर्स हैं.
namely analog computer and hybrid computer. So दो तरीके के कंप्यूटर हैं, पहला है analog computer and the second one is hybrid computer. Analog computers work directly with a physical quantity such as weight or speed. So analog computer जो होते हैं ये directly work करते हैं कैसे, अपनी physical quantity के साथ, such as weight या फिर speed, rather than the digits पे ये work नहीं करती, which represent the quantity. These are the features of both analog and digital computer. Like the digital computer, they process data by manipulating numbers. So digital computer की तरह ये क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और फिर उसे प्रोसेस करते हैं. A computer can solve the problems and figures just with the receiving of instructions. So computer बहुत ही easily जो है हमारी problems को या फिर figures की problem को आसानी से solve कर सकता है, सिर्फ उसे हमें क्या कर देना होता है, instruction देना होता है, as what to do, उसे बताना होता है क्या करना है. A list of instructions for a computer to follow is called program. तो जो भी list of इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को, उस लिस्ट को हम प्रोग्राम कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं. सो इट इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड. सो ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ये हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या क्या काम होना है. इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है एंड मॉडर्नाइजेशन. अब जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ रहा है, हर चीज मॉडर्न हो रही है. व्हेन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन इज नीडेड. अब जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन चाहिए लोगों को, तुरंत के तुरंत बात करनी है, तुरंत आपने वीडियो कॉल कर दिया और आपको फेस टू फेस बात हो जा रही है. कंप्यूटर हैज बीन इंडिस्पेंसिबल टू अस. सो कंप्यूटर ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इन द बिगिनिंग इट वाज मेनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. सो पहले जो है क्या होता था, कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए ही यूज किया जाता था, बट टुडे इट हैज मल्टीपर्पज यूजेस. लेकिन आज के टाइम में कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, साथ में आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप जो है इसमें कोई भी फाइल्स आप बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो, सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो. तो मल्टीटास्किंग हो चुका है आज के डेट में कंप्यूटर. कंप्यूटर इज इमेंसली हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट. सो कंप्यूटर जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा उसने हेल्प की है, साइंटिस्ट की बहुत हेल्प की है हमारे. एंड रिसर्च, we formulate the theory of computer when we developed in the field of science. So हमने जो है theory of computers को और ज़्यादा formulate किया है जब हमने science के field में क्या देखा, development देखा. We use computer when we feel any complicated and time consuming equation. So हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं जब भी हमें क्या मिलता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिल जाता है या टाइम कंज्यूमिंग इक्वेशन मिल जाता है, तो ऐसे केस में हम कंप्यूटर को यूज करते हैं. कंप्यूटर्स हैव बीन प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग एंड डेवलपिंग डिफिकल्ट थ्योरीज. सो डिफिकल्ट थ्योरीज को इवैल्यूएट करना मीन्स उसमें करेक्शन करना या फिर उनको डेवलप करने में कंप्यूटर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है. कैलकुलेशंस यूज्ड टू बी स्लो बिजनेस इन एंशिएंट टाइम्स. सो कैलकुलेशन जो है बहुत स्लो हुआ करता था जब हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं. Many calculating devices were invented for doing calculation. So कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस को इन्वेंट किया गया था. कंप्यूटर कैन डू इवन डिफिकल्ट कैलकुलेशंस विद इन अ शॉर्ट टाइम. सो कंप्यूटर एक छोटे से टाइम में भी बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को भी इजीली कर सकता है. We can use computers in the field of finance and economics. So finance और economics के भी फील्ड में हम आसानी से कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं. It can solve different equations
सो अलग अलग टाइप के जो डिफिकल्ट इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी इजीली कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं. वी यूज इट टू फिगर आउट आवर फोर्सेस एंड बजट. सो अपने फोर्सेस या फिर बजट्स को भी हम फिगर आउट करने के लिए हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं. पीपल कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद दिस इट्स हेल्प. सो लोगों की जो भी वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उसको हम इजीली कंप्यूटर में कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन सेव आवर मनी एंड टाइम. हम अपने मनी और टाइम दोनों को बचा सकते हैं. द ऑब्टेन फिगर आर एक्यूरेट एंड रिलायबल. सो जो भी ऑब्टेन फिगर हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, मीन्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट होते हैं और रिलायबल, उन पर आप विश्वास कर सकते हो. सो जो भी कंप्यूटर हमें देता है वो बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल होता है. मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन स्टोर अनबिलीवेबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन. सो आजकल जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन contained in a computer is called the database. So जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखते हैं उसे हम डेटाबेस कहते हैं. डेटाबेस कैन बी इनॉर्मस, मीन्स बहुत ज्यादा हो सकता है. फॉर इंस्टेंस द एंटायर सेंसस ऑफ द नेशन माइट बी स्टोर्ड इन सिंगल डेटाबेस. सो एक ही डेटाबेस में आप क्या कर सकते हो, पूरे जो नेशन है हमारा उसका पूरा का पूरा जो सेंसस है वो पूरा हम एक ही डेटाबेस में आसानी से रख सकते हैं. टू फाइंड अ स्पेसिफिक प्लेस इंफॉर्मेशन अ ह्यूज डेटाबेस इज सर्च्ड ऑन द कंप्यूटर. सो किसी भी स्पेसिफिक जगह की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बड़े से डेटाबेस को सर्च किया जाता है कंप्यूटर में. Information in the computer can be changed within seconds. So कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं उसे हम चुटकियों में, सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं. Due to its efficiency and accuracy, computer is widely used in various professions. So अपनी efficiency और accuracy की वजह से कंप्यूटर को हम widely means बहुत लंबे बड़े तौर पे यूज कर सकते हैं बहुत सारे प्रोफेशंस में. फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट यूज इट फॉर गेट क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट. सो क्विक और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं किसके, एक्सपेरिमेंट्स की. इन लाइब्रेरीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्शन ऑफ बुक्स. सो लाइब्रेरी में बुक के कलेक्शन के बारे में ये बताते हैं, वहां पे हम ये चीजें स्टोर कर सकते हैं. In hospital, these are used to record about the patient. So patient का रिकॉर्ड रखने के लिए हम हॉस्पिटल्स में नहीं यूज करते हैं. In business, computers are used to store large quantities of information about their employees, customers and products. So business में हम अपने products की जानकारी, customers की जानकारी और अपने employees की जानकारी भी इसमें store करके रखते हैं. Computers have their use in stock market. सो स्टॉक मार्केट में भी कंप्यूटर का बहुत वाइड यूज है, रेलवेज में और बैंकिंग में भी. सो इन जगहों पे भी हम कंप्यूटर वाइडली यूज कर रहे हैं आज के डेट में. कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर इलेक्शन रिजल्ट. सो इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आते हैं उसे भी हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, ऑन अ कंप्यूटर. सेंसस इंफॉर्मेशन मीन्स कि क्या पॉपुलेशन है, ये सब भी कहाँ स्टोर हो रहा है, ऑन अ कंप्यूटर. थ्रू द इंटरनेट वी कैन गिव इंस्टेंटियस एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. सो इंटरनेट को यूज करके हम किसी भी टॉपिक पे फटाफट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं. दस कंप्यूटर इज अ स्टोर हाउस. अब कंप्यूटर क्या है, एक स्टोर हाउस है of knowledge. Yes, its future is very bright in India. कंप्यूटर का जो फ्यूचर है इंडिया में बहुत ज्यादा ब्राइट है. We shall have to depend on it. हमें उस पे डिपेंड करना पड़ेगा. So children, with this we have completed the chapter, and in this chapter we have learned the importance of computers in daily life and the history of computer. So I hope that you have enjoyed the chapter.
Now let's come to the book exercise. So here the first question is, take the correct option. We live in Iron Age, Electronic Age, Stone Age, or none of these. So we live in an electronic age. So this is correct. Now the second question is, the first electronic digital computer was developed in 1936, 1946, 1956, or none of these. So 1946 is the correct answer. Mark it, and the rest questions are your homework you have to do on your own. So children, now let's move on to fill in the blanks. The first question here is, dash is one of the most important or useful invention of this age. So here the answer is computer. Computer is one of the most useful invention of this age, and the first electronic digital computer was developed in 1946. So children, like this, find out the answer of the rest of the questions from your book and complete the exercise. Now let's come to true and false. Computer helps in television broadcasting. Yes, this is true. Computers have undergone a change. Yes, this is also true. Now, let's come to question and answers. Name the most useful invention of this age. So, the most useful invention of this age is computers. And what is a computer? Computer is an electronic device that helps us in many things. It helps us in every way, that everything that we are using today. So it is an electronic device. So like this children, you have to complete the rest of the exercise, and it's your homework. So children, with this we have come to the end of the chapter, and I hope that you have understood the chapter very well. And if you have any queries related to the question and answers or any other topics in this chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay related.